The winter session of this year Parliament commenced on 29th November 2021 and today it is concluded. आज उसका सैनडा एडजर्न हुआ है. 18 sittings spread over 24 days. हमने इसमें टोटल 13 बिल इंट्रोड्यूस किया है. 12 इन लोकसभा, 10 इन राज्यसभा. 9 बिल राज्यसभा में पारित हुआ है, 11 बिल लोकसभा में पारित हुआ है. ये 11 बिल में अप्रोप्रिएशन बिल भी है, डिमांड्स ऑन सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट, वो भी पारित होगा है. टोटल 11 बिल्स इंक्लूडिंग 1 अप्रोप्रिएशन बिल वर पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. 3 बिल उसमें ऑर्डिनेंस थे. एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस और दिल्ली स्पेशल प्रोटेक्शन एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, नारकोटिक ड्रग्स एंड psychotropic substances amendment ordinance 21. These were the ordinance, and one bill, that is biological diversity amendment bill, was referred to the joint committee of the both the houses, and 6 bills have been referred to the standing committee. One is mediation bill 2021 and the wildlife protection amendment bill 2021, national anti-doping bill 2021, the chartered accountant, cost corporate affairs and works accountants and the company secretaries amendment bill 2021, and these 5 bills have been referred to the standing committee. And child marriage act amendment bill, that is also referred to the standing committee. So total 5 plus 1 to select committee and remaining to the standing committee. They were referred, and you know the bills which were discussed and passed, and it is most unfortunate that in spite of our repeated efforts, हमारे प्रयत्न के बावजूद भी